हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू सेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पेपर 20B दैट इज रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर रिवीजन सीरीज का हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने मॉड्यूल 1 देन मॉड्यूल 2 वन बाय वन डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। वैसे ही आज हम लोग मॉड्यूल 3 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एंड ये भी उसी का ही कंटिन्यूएशन है। लाइक इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मार्केट रिस्क जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, उसी का ही एक सेकेंड फेज है जिसमें हम लोग क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड जैसे जैसे हम लोग कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे वन बाय वन, राइट। तो बस आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट मेरे से तरफ से होगा, आप लोग आराम से सुनिए मेरे साथ। पहले एक बार आप लोगों को बुक पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, मेरा नोट्स पढ़ना चाहिए, देन यू आर रेडी टू गो फॉर योर एग्जाम। ओके, एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला, दिट्स शुड बी लाइक अ रेडी रेफरेंसर फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये एक रेफरेंस के तौर पे काम आएगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इलेक्टिव पेपर है, तो 20B 20C का उतना रिलेवेंट रेफरेंसेस नहीं है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। और ये मैं मेरे तरफ से आप लोगों को एक चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एडेड एडवांटेज मिले, क्योंकि हम लोगों के टाइम में भी हम लोग जब क्लियर किए थे तब कोई नहीं था। तो मैंने सोचा था कि once I have qualified and once I have cleared, then I will should do something which help our community as well। तो मेरा एक काइंड ऑफ था कि मुझे कुछ करना है फॉर आवर कम्युनिटी, तो आई डिड दिस थिंग्स, राइट। लाइक पेपर 20C का भी मैंने पूरा रिवीजन सीरीज कवर अप किया है, पेपर 20B का भी आज हम लोग करने जा रहे हैं वन बाय वन। और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम ओपन फॉर ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव और एनी काइंड ऑफ सजेशन इफ यू हैव, प्लीज डू कमेंट इन माई वीडियो। ओके, एंड वंस आई हैव कंप्लीटेड, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है फिर भी मैं बोल रहा हूँ, वंस आई कंप्लीटेड द एंटायर नोट्स आई विल बी शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू, सो डोंट वरी फॉर द नोट्स एट ऑल। अभी आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है। ये भी एक कंटिन्यूएशन है उसी रिस्क टॉपिक का ही। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोगों का अगर एसएफएम स्ट्रांग है, एसएफएम अगर आप लोगों ने अच्छे से किया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दीज आर मोड ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग्स। और इसमें क्या हुआ है ना, इसको इसको थियोरेटिकली लिखा गया है, तो मैंने इसको कंसाइज किया है, मैंने इसको समराइज किया है इन सच अ वे कि आप लोग अगर रीड करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा समझना, राइट। तो लेट्स स्टार्ट क्रेडिट रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करें क्रेडिट रिस्क के ऊपर। फर्स्ट इज नेचर ऑफ क्रेडिट रिस्क इन लेंडिंग। क्या नेचर होगा? क्रेडिट इज द रिस्क of default by borrowers in meeting financial obligations. Like broader risk include interest rate risk, foreign exchange risk, country risk. Similarly, type of credit risk. Default risk is like borrower fails to repay loan. Counterparty risk is a trading partner fails to perform due to adverse conditions. Concentration risk is the excessive exposures to a single counterparty of sector. Country risk is a default due to a country's political or macroeconomic instability. Now, what are the component of credit risk? Transaction risk, risk with individual credit deals. Portfolio risk, intrinsic risk, portfolio risk के अंदर अब intrinsic risk आएगा due to overall quality of credit. Concentration risk, lack of diversification. Factors influencing credit risk. What are the factors influencing credit risk? Like external, economy, market volatility, forex, policies, sanctions, these are there. Internal, weak loan policies, poor appraisals, lack of limits, absence of surveillance, excessive reliance on collateral is also part of this risk. Next is credit risk management framework. Key processes that include risk measurement like credit scoring, ratings, risk quantification like expected loss and unexpected loss, risk pricing like scientific basis, risk control like loan review mechanism. Now, what are the governance structure? Credit Risk Management Committee that oversees policy and implementations. Credit Risk Management Department, like independent body for monitoring compliance and risk parameters. Risk quantification metrics like PD, probability of default, likelihood of borrower's default. LGD, loss given default, like estimated loss if default occur. EAD, exposure of default, expected loan amount outstanding at default. So these are the important part of the credit risk.
नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जाएंगे दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस फॉर्मूला। इसका है ना एक प्रैक्टिकल हम लोग सम्स है वो हम लोग एक देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बस लिख के छोड़ा है। आप लोग अगर मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे और मेंशन करेंगे तो आई विल श्योरली कम अप विथ अनदर वीडियो जहां पे हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क मेजरमेंट अप्रोचेस। क्या होगा बेसल नॉर्म के हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच लाइक यूजेस एक्सटर्नल रेटिंग्स फॉर रिस्क वेट्स। Internal rating based approach is foundation IRB. Bank provide PD, regulator gives others. Advanced IRB is like bank estimate all parameters like PD, LGD, EAD, maturity. Next is Basel 3 enhancements. Capital requirements. Higher capital adequacy norms like from 8% under Basel 2 to 10.5% under Basel 3. Creation of capital conservation buffer or counter cycle buffer. दैट इज ऑल्सो पार्ट। लिवरेज रेशियो यहाँ पे कितना होना चाहिए मिनिमम 3%। ये ध्यान देना आप लोग एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो जिसमें हम लोग को पता ही है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कवर अप होता है। ओके और जो नेट कैश आउटफ्लो होता है वो 30 डेज के अंदर से ज्यादा अगर है तो उसको हम लोग लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर फॉल करेंगे राइट। तो वो यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। स्टेबल फंडिंग इज मोर देन रिक्वायर्ड फंडिंग। इसका एक्सप्लेनेशन भी है डिटेल में। आप लोग इंस्टीट्यूट मैट को रेफर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दीज आर द रिवीजन सेशन। तो इसका पर्पस है कि आप लोगों को एक बार पढ़ा होना चाहिए टॉपिक्स। उसके बाद अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को फटाफट होगा। अगर पढ़ा नहीं है कोई भी चीज कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है फिर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके देखने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप जाके इंस्टीट्यूट मैट को रेफर कीजिए। आप लोग को एक आराम से समझ में आ जाएगा चीज है राइट। नेक्स्ट इज रिवाइज्ड एसेट ट्रीटमेंट। Revaluation reserves considered CET1 with 55% discount. FCTR and DTS like partial inclusion in CET1 under conditions. Credit risk models. Now, Merton's model models companies' equity as a sell call options on its assets. Help assess default risks based on asset value and debt levels. Basis of Black-Scholes options pricing model. So these are the Merton's model के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडस्ट्री एंड बिजनेस पैरामीटर्स कवर अप हो सकता है। प्रेडिक्ट वेदर द बोरोवर विल मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेसेल्स गाइडलाइन लाइक क्रेडिट रिस्क एनवायरमेंट board approved strategy and policies. Senior management must implement effective systems, right? Next, credit granting processes. Well-defined criteria, exposure limits is also there, and arm's length principles is also important. Next, credit administration and monitoring. Internal ratings is there, MIS, provisioning adequacies, and stress testing. Controls and supervision. Internal audits, exception reporting, early remediations of bad loans is also covered up. Next, role of regulators. Supervisory review, independent evaluation and setting prudential limits. क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या है अब ये समझना जरूरी है। एट ट्रांजैक्शन लेवल कोलेट्रल लाइक कैश और सिक्योरिटीज थर्ड पार्टी गारंटीज क्रेडिट डेरिवेटिव्स इज देयर। एट पोर्टफोलियो लेवल सिक्योरिटाइजेशंस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्रेडिट इंश्योरेंस। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है सीआरएम में इंक्रीज अदर रिस्क लाइक लीगल ऑपरेशनल एंड लिक्विडिटी राइट। तो दीज आर दी पार्ट। नेक्स्ट इज कंक्लूजन में हम लोगों ने एक चीज लिखा है यहाँ पे क्रेडिट रिस्क इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वाइड स्प्रेड रिस्क फेस्ड बाय बैंक्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट involves identifying, quantifying, controlling, mitigating risk through robust governance. Basel aligned capital measures and technological advancements, sound credit policies, continuous monitoring, and active portfolio management are essential to ensure financial stability and regulatory compliance. So इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को कवर अप किया। अब हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसमें हम लोगों ने पॉइंटर करके मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ये बहुत डिटेल में इंस्टीट्यूट के मैन में दिया गया है। आप लोग बस इसको रीड करेंगे मेरे साथ तो आप लोगों का कवर अप हो जाएगा बहुत कुछ ठीक है। क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा चीजें यहाँ पे डाला हुआ है तो मैंने कंसाइज वे में इसको कवर अप किया है। आप देख सकते हैं।
तो बस आप लोग एक बार मेरे साथ ध्यान से सुनते रहेंगे और एक बार 2 बार रीड करेंगे तो आप लोगों के लिए काम हो जाएगा। ओके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया। एंड नेचर एंड इम्पैक्ट क्या होगा इसका? NPAs are loans or advances where interest or installment remain overdue beyond 90 days. They stop generating income and require provisioning, thereby impacting a bank's profitability, weakening capital adequacy, reducing its credit rating. NPAs cannot be completely avoided but can be minimized through vigilant monitoring, careful sanctioning, and restructuring of viable accounts. NPA reduction measures like pre and post sanction monitoring, regular review, viability analysis, borrower discussion, stock audit, scrutiny of financials help detect early sign of distress. Similarly, rehabilitations and restructuring include rephasing loans, OTS like one-time settlement is there, and invoking guarantees. Recovery tools like Lok Adalat, DRT जो अभी शायद नहीं है, SARFASI is also there, civil suit and IBC. Similarly, IBC revisions is there, ensure time-bound resolution, prioritization of secured and unsecured creditors, resolution plans must be implemented within 180 days. NPA recovery, benefits and compromise settlement. Now, recovery recycle funds strengthen the balance sheet, improve profitability, compromise settlement, save time and legal cost, but may lead to financial loss and negative precedent. Sell trading of NPS. Bank may sell stressed assets to other institutions, including SCRCs, banks, or NBFCs. RBI has framed a transparent guideline for valuation, bidding, e-auction जिसको हम लोग बोलते हैं, buyer participations, and internal policies. ARC, we know that asset reconstruction company, हम लोग अगर सरफसी पढ़ के आप लोग आए हैं लॉ में तो वहां पे तो है ही ना. ARC acquires stressed assets from banks to focus on recovery. RBI encouraged top down in identification of NPS, periodic review by bank boards. Bank must disclose investment in security receipts and reduce SR backed exposure. Swiss challenge method and buybacks. This method enable competitive bidding and price discovery for asset sale. Bank may buy back Bank may buy back performing asset from ARCs post restructuring under certain conditions. तो ये भी होता है, तो ये ध्यान देना आप लोग. बैंक कभी कभी क्या कर सकता है ना, बायबैक कर लेता है परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम ARCs post restructuring under certain conditions. Next, current NPA scenarios. As per RBI, gross NPAs in India stand 4 lakh CR with 90% held by PSBs. Reasons include overlending pre-2008. Project delays is also reason. Tax credit appraisal is there, and global फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज ऑल्सो रीजन. ठीक है, तो ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. मेजर्स टू टेक टैकल एनपीएस, strengthening IBC and credit risk management, enhance MIS for early warnings, banking law amendments, governance reforms and executive accountability, asset monetization and capital infusion, attractive private investment and CRR reforms is also there. Key financial ratios for NPS analysis, gross or net NPS इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है. प्रोविजन कवरेज रेशियो इज देयर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज देयर, कासा रेशियो इज देयर, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज देयर, नेट इन्वेस्टमेंट मार्जिन इज देयर, रिटर्न ऑन एसेट इज देयर. नेक्स्ट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. इसका मतलब क्रेडिट रिस्क इंक्लूड डिफॉल्ट, स्प्रेड रिस्क, concentration and systematic risk, country risk. Management involves risk identification, measurement, monitoring, and mitigation. Credit rating models based on borrower and industry characteristics like transaction level mitigation, like collateral guarantees, portfolio level strategies like securitization, credit derivatives. Next is insolvency and bankruptcy code, IBC. तो these are we have already covered up in our law paper, right? तो अगर आप लोगों ने लॉ अच्छे से किया है तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट?
तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी 2016 में इंट्रोड्यूस्ड अ कंसोलिडेट इंसॉल्वेंसी लॉ फॉर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन applies to corporate LLPs, firms, and individuals. Key institutions like IBBI, insolvency professionals, NCLT, DRT is there, moratorium, IRP appointment, COC decision making is there. The resolution or liquidation based on 66% COC vote is also the part. फाइनल अप्रूवल बाय एनसीएलटी आफ्टर सीओसी अप्रूवल। तो मैंने क्या किया ना, ये आप लोग पढ़ के इस पे समझ में नहीं आएगा, मैंने तो एक शॉर्ट में इसको लिख दिया है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक बार इसके लिए कॉर्पोरेट जो लॉ पेपर है हम लोगों का, पेपर 13 शायद, उसको एक बार आप लोगों को रेफर करना चाहिए, राइट। तो आप लोग एक बार कॉर्पोरेट लॉ पेपर को रेफर करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा। कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है, इफेक्टिव क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क लाइक आईबीसी आर क्रिटिकल टू रिड्यूस एनपीएस, रिस्टोर क्रेडिट डिसिप्लिन एंड इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इसी के साथ मैंने बस इसको सिंपल रीड किया है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक एक बार आप लोग, अगर आप लोगों का लॉ है पेपर 13 आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, या फिर आप लोग एक साथ दे रहे हैं एग्जाम, तो आप लोगों को तो बहुत ईजी होगा समझने में। बट अगर किसी का पेपर ग्रुप 3 किया हुआ है एंड ग्रुप 4 में अभी वो मेरे साथ ये देख रहा है वीडियो, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार आईबीसी को अच्छे से पढ़ के आएंगे, सरफसी को एक बार अच्छे से रीड करके आएंगे, याद नहीं करना है बट एक बार रीड करके आएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा ये टॉपिक समझना, राइट। क्योंकि मैंने इसको समराइज किया है, बट ये बस फॉर द सेक ऑफ नहीं है कि मैंने बस करके दे दिया है। मेरा मेन मोटो है आप लोगों को एक बार ओवरऑल व्यू देना, ओवरऑल एक आप लोगों को मैपिंग करके देना कि ये चीजें हैं और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस, आप लोग एग्जाम के पहले जब पढ़ के एग्जाम देंगे तब आप लोगों के लिए फायदा होगा बहुत, है ना। तो एक दो बार तो आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, कि आप लोग पहले से ही ऐसा मत कीजिएगा कि इसको पढ़ के ही चले गए, नहीं। इसको पढ़ के मैं बोलूंगा आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट मैट को रेफर कीजिए, देन आप लोग इसको अगर देखेंगे, इसका नोट्स देखेंगे, बहुत फायदा होगा, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, यहाँ पे भी मैंने छोटा छोटा करके कुछ कुछ डिस्कस किया है एज अ छोटा छोटा पॉइंट करके। अगर आप लोग इंस्टीट्यूट मैथ को देखेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये तो बहुत सारा ज्यादा डिस्कशन है, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए छोटा छोटा करके एकदम पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। एक फटाफट आप लोग बस मेरे साथ सुनते जाइए। नेचर ऑफ एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो ऑलरेडी मैंने किया है, दोज लोन अकाउंट्स वेयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट्स हैव नॉट बीन मेड फॉर मोर देन 90 days, एनपीएस सीजेस टू जनरेट इनकम, erode bank profit, require mandatory provisioning, and negatively impact the bank's capital adequacy and market rating. Control and reduction of NPS. While NPS are inevitable to some extent, they can be minimized through prudent lending practices, rigorous credit appraisal, early intervention for stressed assets, restructuring viable units, compromise settlement, and active recovery mechanisms. Regularly monitoring and review at all stages of a credit life cycle are crucial. Monitoring practices. Effective pre-sanction and post-sanction monitoring includes detailed financial analysis, borrower discussion, stock audit, comparison with industry benchmark, and real-time tracking of cash flows. Early warning signs such as delays in interest payment or unsatisfactory conduct of account must be flagged immediately. रिकवरी टूल्स में क्या कवर होगा, बैंक्स यूज वेरियस लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल टूल्स लाइक लोक अदालत, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स डीआरटीज, सरफासी एक्ट प्रोसीडिंग्स इज देयर, सिविल सूट इज देयर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड to enforce recovery of dues is there. Each mechanism offered a structured path for resolution. देख रहे हैं आप, मैंने एक नोट में छोटा करके पूरा डिटेल जितना हो जाए कवर अप करने का कोशिश किया है फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, कंप्रोमाइज सेटलमेंट, pros and cons. Compromise settlements such as one-time settlement or out-of-court settlement help recycle funds and save time litigation cost. However, they may be lead to monetary losses, uncollected interest, and may establish a lenient precedents if not handled judiciously. Gain of a NPA recovery. Recovering bad loans, improving the operating profits, liquidity, and capital strength of a bank.
It enhances profitability ratios and support fresh lending and positively affect the credit rating of the bank. Next, trading sale of a NPS. RBI permits a sale or purchase of a NPS among banks and financial institutions. This process is governed by strict guidelines ensuring valuation accuracy, transparency in buyer participation, and top-down asset identification by the bank's head office. Next, role of ARCs, asset reconstruction companies. ARCs buy stressed assets from banks and aim to revive viable borrowers or liquidate collateral for recovery. They allow banks to focus on core lending while transferring recovery responsibility to specialized agencies. Security receipts and disclosures. Banks receive security receipts when selling NPAs to ARCs. Obvious बात है. To prevent artificial recognition of recovery, RBI restrict the extent of SRs banks can hold. SRs means security receipts can hold in their own sold assets and mandate comprehensive disclosures in financial statement. I hope आप लोग को समझ में आ रहा है. आप लोग अगर सरफसी एक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीजें. Next, Swiss challenge method, a transparent and competitive bidding method used to sell stressed asset. Bids are invited from multiple buyers with the right of first refusal granted to the ARC with the largest existing exposure, enabling better price discovery and faster resolution. Next, buyback of financial asset. Bank may repurchase restructured asset from ARCs post successful implementation, subject to performance and compliance. However, banks cannot reacquire asset they themselves had earlier sold to ARCs. Very important. Very important from exam point of view. ये आप लोग याद रखना. Banks cannot reacquire asset they have earlier sold to ARCs. Next, status of NPAs in India, जो हम लोगों ने already cover up किया है. Public sector bank hold approximately 90% of India's total NPAs, INR 4 CR. The rise in NPAs has been attributed to aggressive lending, poor governance, project delays, and macroeconomic shocks. Reason for rising NPAs: from 2000 to 2008, banks extended large corporate loans. Post 2008 crisis, sectors like infrastructure and steel collapsed due to regulatory delays, price volatility, and raw material shortages. Weak credit appraisal and absence of risk monitoring further further exacerbated the issue, right? Next is recent development to tackle NBS. क्या recent development है? The IBC was enacted, enabling time-bound resolution. RBI was granted enhanced powers. Banks adopted improved MIS, more stringent executive accountability, and restructuring norms. PSU banks are also recapitalizing and strengthening governance structures. Next, key bank health ratios. Important ratios include gross or net NPA ratios, provision coverage ratios, capital adequacy ratios, CASA ratios, credit deposit ratios, net interest margin ratios is there, return on asset is there. These help monitor banks' solvency and performance. Next, credit risk component. Credit risk include default risk, downgrade risk, concentration risk, systematic risk, counterparty risk. These risks arise from the lending operations and affect both individual and portfolio levels. Credit risk management process क्या है? This involves identifying, measuring, monitoring, and controlling risk. Credit rating models assess borrowers' reliability. Governance frameworks ensure compatibility between risk management and business objectives. Next, credit risk mitigation technique क्या है? Traditional mitigation include collateral, guarantees, and restructure repayment at the portfolio level. Banks use securitization and credit derivatives to diversify and offload risk. Next, securitization and derivatives. Securitizations packages asset into tradable securities backed by loan cash flows. Credit derivatives like
credit default swaps transfer risk without transferring the asset, improving bank liquidity and risk management. आईबीसी 2016 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पहले रीड किया है, फिर से रीड कर रहे हैं. द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एम्स टू कंसोलिडेट इंसॉल्वेंसी लॉज, ensure time-bound resolution, maximize asset value, balance stakeholder interest, and improve ease of doing business in India. IBC legal framework. Institution under IBC include IBBI, NCLT, NCLT, Debt Recovery Tribunal, insolvency professionals, information utilities. They facilitate corporate insolvency, liquidation, and bankruptcy resolution. IBC resolution mechanism. Under IBC, proceedings are initiated by creditors or debtors. Moratorium halt all legal actions, an IRP is appointed and a committee of creditor decides on resolution or liquidation by 66% vote. Final approval is given by NCLT. तो इसी के साथ हम लोगों का शायद मॉड्यूल 3 भी कंप्लीट हुआ, एंड मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों को, हाँ मॉड्यूल 3 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया, राइट. तो मैंने ये बहुत छोटा करके कंसाइज वे में आप लोगों को दिया है नोट्स. आप लोग पहले एक बार इंस्टीट्यूट मैट को रीड करेंगे, उसके बाद आप लोग इसमें आएंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे साथ सुनेंगे पूरा, देन आप लोग 2-3 बार रीड करेंगे तो समझ में आएगा. इट्स अ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग्स, एंड आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा है, लॉ में भी पढ़ चुके हैं आप लोग. सरफसी हो गया, आईबीसी हो गया, अच्छा ये सब कुछ हम लोग एसएफएम में भी रीड किए हैं. एसएफएम का हम लोग का टॉपिक भी है रिस्क मैनेजमेंट के में, जहाँ पे हम लोग बीटा कैलकुलेशन करना सीखते हैं, राइट. तो दीज आर ऑलरेडी कवर अप इन पेपर 13, राइट, इन पेपर 14 एसएफएम. तो हम लोग बस उसी को फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं. और क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो ऑब्वियसली मेरे लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है इस वीडियोज में. मुझे समझ में आता है कि कोई कोई लोग होता है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते होंगे, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन तो रिवीजन वीडियो में पॉसिबल नहीं है. मेरा काम है आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया देना, ओवरऑल आप लोगों को एक मैपिंग करके देना कि दीज आर देयर इन आवर सिलेबस, तो आप लोगों को बस इसको अच्छे से करके जाना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है. एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर बुक ऑफ द इंस्टीट्यूट मैट, आप लोग इसको बस उसके बाद ये वाला नोट पढ़ेंगे मेरे साथ वीडियो देखेंगे. मैंने जहां जहां बोला इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट आप लोगों ने मार्क किया है. दैट्स इट, दैट इज एनफ फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, एंड आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, राइट. तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, एंड आने वाले वीडियो में भी मैं ऐसे ही 1 by 1 मॉड्यूल्स कवर करके कंप्लीट करने वाला हूँ. जैसे मैंने पेपर 20C आप अगर देखेंगे मेरा प्लेलिस्ट में जाके, अगर आप लोग के कोई फ्रेंड पेपर 20C के लिए ऑप्ट करने का सोच रहा है तो उन लोगों को बोलिए कि एक बार वीडियो देखे मेरा, तो उन लोगों को एक आइडिया लगेगा. सिमिलरली आप लोग अगर सोच रहे हैं कि पेपर 20B कैसा होगा, कैसा पेपर है, तो आप लोग भी उन लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन लोगों को बोल सकते हैं कि अकबर एक बार देखिए ये वाला वीडियोस. उन लोगों को एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ये मैं इस टॉपिक में ये टॉपिक है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है. तो होता है ना कि इलेक्ट्रिक पेपर है तो आप लोग सोचते हैं कि कौन सा ले, पेपर 20A ले कि 20B ले कि 20C ले, विच वन वी शुड ऑप्ट, राइट. तो दीज आर देयर इन आवर माइंड ऑल्सो व्हेन वी आर ऑल्सो स्टूडेंट. तो हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग के माइंड में भी ये सब था कि पेपर 20A लेना चाहिए कि 20B लेना चाहिए कि 20C लेना चाहिए. तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी एक फायदा होगा कि अगर कोई अभी तक ऑप्ट नहीं किया है तो उन लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा पेपर लेना चाहिए, कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, राइट. तो जरूर से जरूर आप लोग वो भी एक बार देखिए कि कौन सा पेपर यू शुड ऑप्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन, राइट. तो इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ. आप लोग आई होप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा अगर आप लोगों ने एक बार रीड किया है 2-3 बार इंस्टीट्यूट मैट को. और अगर आप लोगों का लॉ अच्छा है, एसएफएम भी अच्छा है, तब तो आप लोगों को और भी इजी होगा समझने में, क्योंकि ये सब उसी का राइटअप है. वो सब चीजें यहाँ पे फिर से थियोरिटिकल वे में लिखा गया है. एक्चुअली दीज आर मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स. डेली अगर कोई भी आप लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा, राइट. तो आप फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, आपको एक बार इंस्टीट्यूट मैथ पढ़ना चाहिए, देन आप लोग इसको पढ़िए, आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा. पूरा एंटायर पेपर 20B आप लोग आराम से कंप्लीट करके एग्जाम दे सकते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा. तो इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड थैंक यू फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ पेशेंस. और अगर आप लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले से सुन रहे हैं 1 by 1 सेशंस, तो थैंक यू सो मच. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई जूनियर है जो सोच रहा है कि पेपर 20B लेना चाहिए कि 20C लेना चाहिए, तो आप लोग दोनों वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट. सो
थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर टुडे। एंड आई होप कि आने वाले सेशन में भी आप लोगों को अच्छा ही लगेगा और जितने भी मॉड्यूल्स है मैं वन बाय वन कवर अप करने वाला हूँ, राइट? सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।